Hello everyone, I'm CA Rahul Jain, co-founder of Rahul CA Academy. I am a faculty of accounts, costing and FM at CA intermediate level. Today with us, we have a very special guest, Angi Palrecha, who has secured All India rank 50 in her CA intermediate examinations Jan 2025 attempt. She scored 96 in accounts, 91 in costing, and phenomenal marks in the other subjects as well. I know her since her CA foundation level. She's been a student of RCA of both CA foundation and CA intermediate level. She's a very humble and a simple girl to whom most of you will be able to relate to. Just yesterday, we had this conversation about her approach towards the examination, and I thought, why not share it? Because I'm pretty sure that a majority of you will be able to relate to it. We're going to keep this conversation really short, talk about the most important points or the relevant points from a preparation perspective only. So, Angi, first of all, many congratulations to you again. That Thank was you. an achievement. It's your sheer hard work that has clearly shown in the marks and the rank that you've got. Thank you, Angi, sir. yeah. So Angi, starting off with, tell me what was your approach towards preparation? We are going to divide the conversation into two parts. One is during the class phase, and the other one is during the self preparation phase. So starting off during the class phase, just to tell everyone, the physical classes for her batch commence in the month of Feb, and the classes ended in the first or second week of August, and after that they had self preparation time. So, Angi, during the physical classes, during the regular lectures that go on, what do you think should be the approach of a student towards the course, towards preparation? So yeah, first of all, classes, we have to attend the classes regularly, and not just attending it, we have to pay attention in the class for the conceptual clarity. And yeah, and after coming home, it's very difficult to revise, but on a daily basis, we have to revise a little bit so that in our self preparation time, we don't face any major problems in revising them. Yeah. All right. So the first important thing that we're talking about here, guys, is that you have to take your classes very seriously. You're not supposed to miss your classes. And also, most important part, as he pointed out, it's not just mere attending the classes. It is about paying attention in the classes so that you actually, understand things, and it helps you during your self preparation phase. And then, because we are all aware that the classes go on for almost about 9 to 10 hours every day. Going back home and revising would be a Herculean task. But then, if you just allocate about 2-3 hours, take out that time after going back home, it will help you a lot in the long run. So, all right, Angi. So, the first important point was about attending classes regularly, not missing your classes. The second let us come to the next point. How important do you think is the importance of the weekly test, the regular tests that are conducted during the course of the classes? तो वो टेस्ट के वजह से वी आर फोर्स टू स्टडी एंड इफ वी डोंट टेक द टेस्ट लाइट seriously then it will pile up. The syllabus goes on piling up. We have a lot of subjects, 6 subjects, and syllabus is also very vast. So yeah, tests help us in being a little more proactive in studying. So yeah, test. Are mandatory. Yeah. So what we understand is forced to study. I wouldn't say that we were forced, but then हाँ ठीक है. At least test के बहाने बच्चे पढ़ लेते हैं. They keep up with the syllabus, and so do you think test in your rank in the marks? Do you think test helped you actually? हाँ, मतलब क्योंकि कितना जहाँ कितना एक्सटेंड तक प्रिपरेशन क्लासेस के दौरान ही हो चुका था, मतलब while attending classes and also writing those tests. I remember कि तुम्हारे बैच में हर हफ्ते ऑलमोस्ट 2 से 3 टेस्ट होते थे. सो उसका इम्पोर्टेंस क्या था, मतलब कितना प्रिपरेशन हो चुका था उसकी वजह से? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो मैं बोलूंगी ऑलमोस्ट 3/4 हो चुका था, वाओ. क्योंकि हाँ, प्रैक्टिकल इज आई फील इट इज अ लिटिल इजियर फॉर मी. थियोरी नॉट रियली, बट या व्हेन वी रिवाइज वी आर एबल टू रिकलेक्ट सम थिंग्स. तो हाँ, क्योंकि जब टेस्ट लिखते तो अपनी गलतियां भी पता चलती है कि कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं. सो तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू राइट दोस वीकली टेस्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट नोइंग कि ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है सिलेबस देख के कि ये तो सब आता है, बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग इट डाउन ऑन अ पेपर, you fall short of words.
you are not able to express it, and that happens a lot during theory papers, in theory papers. So it helps you with presentation as well. You know how to you actually present the answers properly जब खुद से सब कुछ करते हो. So guys, अभी तक जो discussion हुआ है, say you should know one thing, that you have to attend your classes regularly. You have to write the tests that are conducted, and that is what is going to maintain the discipline. So coming to the next point, discipline and consistency. What do you think is the role of this in the success during CA exams? तो बहुत बार तो ऐसा ही लगता है कि कितना पढ़ेंगे, और हमारा तो 5 मंथ्स भी गैप था तो Oh yeah, so we will talk about this in the later part of this, that they got 5 months. But ये जो discipline and consistency during classes है, every day सुबह उठ के वो feeling आती थी क्या कि नहीं आज नहीं जाते क्लास, थक गए, let's just take an off. या बट वो फिर आगे जाके ही प्रॉब्लम होगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले से ही रेगुलर रहे, ताकि वो हैबिट डेवलप हो जाए कि हाँ रोज करना ही है. तो see, to get over this feeling कि नहीं आज नहीं करना है, is it very important that we also take timely breaks? जैसे we did not have classes on Sundays, and apart from that also I used to tell in the classroom that कुछ ना कुछ एक नई habit डालो, exercise for 15-20 minutes, play a sport, go out with your friends. Is it very important that you keep doing those things on a regular basis so that you do not get sick of starting, you do not get sick of the routine कि रोज उठना है, क्लास जाना है, पढ़ना है, रोज उठना है, क्लास जाना है, पढ़ना है? तो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी, और मैं पेंटिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, तो मतलब मेरे को जब टाइम मिलता था तो मैं पेंटिंग करती थी. That is so nice, guys. So I suggest all of you. See, Angi here has spoken about a very important point. There should be something, that is reducing the amount of stress or whatever you term it as. Just deviate from the regular routine, do something else, so that you do not take the studies as a burden. The very very important point. Now, Angi, we will stick to the point of physical classes. अब जैसे practical subjects होते हैं, तो practical subjects में during the classes, what should be the approach? जैसे अभी मैं भी अभी question पढ़ रहा हूँ. So what next? Should you directly straight away, look forward to only the answer, or should a student be trying to solve the question on their own? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट द आंसर, मतलब वही डायरेक्शन में अपन सोचेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, स्टेप्स याद रख लेंगे. बट अगर फिर कोई नया क्वेश्चन आया, कुछ डिफरेंट पॉइंट है, तो वी आर ब्लैंक फॉर अ सेकेंड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले अपन खुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करें, फिर आंसर चेक करना कि हाँ कहाँ गलत गए, कहाँ मतलब करेक्ट हो सकता है. सो वो भी है. So guys, very important point basically practical subjects में. See, so जैसे classes के दौरान what the approach that we had is, I read the question first, give you a little time, so that you go through the entire question, try solving it on your own, and then we redo the questions, solve the question collectively. It happens a lot. जैसे जब मैं student था, it has happened with me also कि you read a question, and you directly look at the solution. You're only thinking in that direction. तुम्हारा brain creative नहीं होता. You will never think about the other points. But then if you start solving question on your own, तभी पता चलेगा कि where is the problem in interpretation, कहाँ गलत जा रहा है, क्या हो रहा है. And this way, whenever a new question comes in the examination, you will never face any difficulties. So practical paper में, as you rightly pointed out, try solving questions on your own. And अगर वो करते हो, don't you think आगे की 75 to 80% preparation क्लास में खत्म हो जाता है? या डेफिनेटली, क्योंकि प्रैक्टिकल इज वन सब्जेक्ट कि हाँ क्लास में ऑलमोस्ट हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर द डिफिकल्ट पार्ट्स. एंड जो क्वेश्चंस अभी मेन मेन जो आप जैसे मार्क करवाते थे कि अलग पॉइंट्स क्या है, तो वो जो मार्क कर जो वन डे बिफोर एग्जाम, इट बिकम्स इजी फॉर अस टू रिवाइज इन सच अ शॉर्ट टाइम. जब वीकली टेस्ट पढ़ते हो, तब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी उतनी मेहनत लगती है जितना थ्योरी पेपर में लगती है? या क्योंकि तभी मेन प्रिपरेशन होता है प्रैक्टिकल का, डेली बेसिस पे. Excellent. So what we learn here is that even for weekly tests, you have to redo the entire thing, though you've done that in the class. And by doing that, we were ensuring that we are covering up almost 70-80% of the syllabus during the classes itself. Now Yes. talking about the theory papers, Angi. Yeah, so not to miss out on the point that she already mentioned, कि हर question में क्या अलग point होता है वो mark करना चाहिए, and you're supposed to ensure that you revise all of those important points before the examination so that it becomes easier during the revision time. Correct, Angi? Yes. That is what we were Yes. talking about. And then, Angi, about the theory papers, what do you think should be the approach of a student in the class and after the class, and how important revision is? In the class, again, attention is very important for
या एंड रिवीजन भी होता है क्लास में रोज डेली बेसिस पे, तो वो भी, उस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और फिर घर पे भी एक बार ही सही, एक बार रीडिंग देना बहुत जरूरी है, ताकि भूले ना अपन, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो हाँ कुछ तो याद है, कि वेरी पूरा गुड। नहीं भूले हैं। जैसे अंकिता मैम कहते थे क्लास में कि रिवीजन वीडियोस गाने के जैसे ही सुन लो। डज दैट हेल्प? मतलब हाँ सी दे आर शॉर्ट रिवीजन वीडियोस, 15 मिनट के वीडियोस है, आधे घंटे के रिवीजन वीडियोस है, अगर वी जस्ट लिसन टू देम वंस इन अ वाइल, डज दैट हेल्प यू इन रिटेनिंग द कंटेंट ओवर अ वेरी लॉन्गर पीरियड? या जैसे अभी वो थोड़े जो बड़े चैप्टर्स है, मैनेजमेंट एंड ऑल, तो उसमें भी अगर मेरे को ऐसा ही लगता था हर बार कि मैं भूल गई, तो वो एक वीडियो देखने के बाद लगता है कि हाँ फेमिलियरिटी है, कि हाँ पढ़े हैं अपन। सो या रिवीजन डेफिनेटली हेल्प्स, द वीडियोज डेफिनेटली हेल्प। All right, Angi, that was a lot about physical classes. Also, I'll just conclude it about the physical classes that you have to take your classes very seriously, ensure that you attend the classes regularly, and then ensure that you take your tests seriously. This is how you will be, maintaining that discipline. You will be done with the majority of the syllabus. Now, coming to the next part, which is during your self preparation time, Angi. You guys were lucky enough that you got 5 months of self preparation time due to the change in frequency of the exams. Your exams are supposed to be in November, they got rescheduled to Jan. So normally, बच्चों को 3 से you will have 3 to 3.5 months of self preparation time. So उस self preparation time में what should be the approach of a student? Let us see. So you've got 5 months. Let us first talk about your approach. So what was your approach during the self preparation time? तो बिकॉज वी गॉट 5 मंथ्स, मेरा तो यही था कि 2 to 2.5 मंथ में मेरा पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, ताकि मैं मॉक टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ और अटेम्प्ट कर पाऊँ। जैसे कि अभी हम लोग के लिए 3 मॉक टेस्ट है, Yeah, आपके because एकेडमी। yeah, perfect. So because you had 5 months and we had 3 mock tests. So yeah, so how did you plan during those 3 mock exams? तो फर्स्ट मॉक तक तो मेरा ग्रुप 1 ही हुआ था। सेकेंड मॉक में मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया कि हाँ थोड़ा अभी पढ़ना है, तो ताकि रिवीजन भी हो सके ग्रुप 1 का, वरना फिर भी वो भी भूल जाते हैं। तो हाँ, उसके बाद सेकेंड मॉक तक पूरा हो गया था। फिर मॉक 3 के टाइम में फिर से रिवीजन एक बार का। So यहाँ पे आई वुड से कि अगर बच्चों को तीन सी नॉर्मली दे गेट अबाउट 3 3.5 months टाइम, सो इफ दे गेट 3 3.5 months टाइम, जैसे मैं क्लास में बोलता था कि इट विल टेक अबाउट 45 to 50 days फॉर यू टू फिनिश द एंटायर 6 subjects provided you have concentrated during classes, you have attended the classes properly, you have solved questions and everything. So do you think that 50 days of studying is sufficient to finish all the 6 subjects provided you study about say 10 to 12 hours a day? या व्हेन इट इज 3 मंथ्स, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, तो 50 डेज इज, आई होप, सफिशिएंट टाइम। क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स है, बट थोड़े सब्जेक्ट्स तो पढ़े हुए होंगे, मतलब क्लासेस के वक्त वो थोड़ा रिवीजन हुआ हुआ होगा, तो या 50 डेज आई गेस इज सफिशिएंट। So, do you think that students should do one subject during that revision time of 45 50 days, or should they be doing 2 subjects a day? Or do you think, it's different? What did you do? Did you do one subject or did you do 2 subjects a day? सो फॉर टैक्स आई डिड वंस, पूरा एक साथ खत्म की थी मैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए 2 सब्जेक्ट्स है, वरना क्योंकि बहुत वो हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, सिर्फ थियोरी पढ़ोगे तो वो भी प्रॉब्लम है। सो All right, so रिटेंशन। I'll just add it here कि जब मैं स्टूडेंट था I couldn't do theory, मुझे भी theory के साथ प्रॉब्लम थी, जैसे you rightly pointed out, तो I used to do 2 subjects a day, do theory in the morning and then do practical subjects during the daytime. Plan कि हर 15 दिन में दो दो सब्जेक्ट खत्म करते जाओ। थोड़े सब्जेक्ट्स के लिए शायद कम टाइम लगेगा, थोड़े सब्जेक्ट्स के शायद ज्यादा टाइम लगेगा, but that is how you end up finishing the entire syllabus on time. Uh, how important do you think is writing mock exams before the main examination? टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि हमें कितना टाइम एलोकेट करना है एक क्वेश्चन को, एमसीक्यूज को, फिर थियोरी क्वेश्चंस भी होते हैं, एंड देन प्रेजेंटेशन। जैसे थियोरी सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर अपन कहाँ लैग कर रहे हैं वो भी पता चलता है। अभी थियोरी में याद भी नहीं आता है, बहुत बार नहीं याद आता है, तो इट इट गिव्स अस अ आइडिया कि हाँ आगे करना क्या है। सो या Excellent. दैट इज Excellent. इम्पोर्टेंट। Yeah. So, guys, writing mocks is very, very important. Please do not skip mocks. Do not skip weekly tests. And Angi, one small important thing, I think we have covered almost everything that is required. One small important part is ये tendency रहती है हमेशा कि we think that we have forgotten things. Do we really forget things, or is it just the fear
that we have forgotten thing? What do you think it is? क्या मतलब ये सिर्फ डर है क्या अपना कि हम चीजें भूल गए सब कुछ? आई थिंक इट इज बोथ, क्योंकि डर भी तो बहुत होता है कि हाँ अगर इतना सब कुछ है, कुछ भूल गए तो। एंड कभी कभी तो सच में भी भूल जाते हैं वो, तो थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन। बहुत भूल ही जाते हैं, बट ऐसा होता है क्या हाँ, कि 100% एरेज हो चुका है एंड सब कुछ स्क्रैच से करना है? नहीं 100% तो नहीं, क्योंकि जब एक बार रिवीजन के लिए बुक खोलेंगे तो हाँ लगेगा कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये याद है हमें, तो वो एक उसी डर तो तो होता अगर ही। 10 घंटे अगर पहले लगा है एंड अभी तुम, डू यू रियली थिंक कि बच्चों को जो टेंडेंसी होती है कि सब भूल गए, वापस 10 घंटे लगेगा? या इट्स इट्स इफ यू जस्ट रिवाइज इट इन 1-2 hours, डू यू थिंक यू विल बी गुड टू गो? या डेफिनेटली, क्योंकि इतना 10 आवर्स लगा के पढ़ा है तो ब्रेन में भी तो पढ़ना गया ही होगा कुछ, या तो वो रिवीजन डेफिनेटली में। या ब्रेन में गया होगा. You must be, it is somewhere back in your head, so don't worry about it. So Angi, I think we have covered everything that is required, for the students. One last thing, what is your advice to the student fraternity? कि यही रोज पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी बेसिकली, ताकि एक अगर गैप आ गया तो ऐसा लगता है कि हाँ नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा सेल्फ डाउट में नहीं रहना कि नहीं होगा हमसे, हमने क्योंकि अगर पढ़ा है तो सब कुछ होगा ही। सो या Yeah, so guys, that confidence, self-confidence that is required, and then the consistency and discipline is the key to success, as rightly pointed out again. This reminds me, my own lecturer once said that when you're starting for CA course, you are being a part of marathon. It is not a 100 meter or a 200 meter race that you start running at a very high speed right from the beginning, because if you do that, you're going to burn out very soon. Marathon may you maintain that pace. So CA inter preparation is all about that 9 months, 10 months consistent preparation. You cannot do 16 hours right from day one, because if you do that, you're going to burn out yourself. You will give up before the examinations. So you will have to find a sustainable strategy. Do something that can be maintained for the entire 10 months period, and not just something that will be maintained only for a month. I hope this video would be helpful to all the students preparing for examinations. Angi, again, thank you so much for joining us. Thank you for sharing all the insights with the students, and congratulations to you again. You have done wonderfully well. थैंक यू सर, थैंक Thank यू टू you. यू एज वेल, So, yeah, thank थैंक you. यू टू ऑल द टीचर्स, थैंक यू टू ऑल द टीचर्स। Thank you. It's all your hard work, nevertheless. But then, yes, thank you so much. So, guys, we are signing off for the day. We are signing off for this video. I have a habit of saying that we're signing off for the day. So, yeah, we're signing off for the video, guys. Bye bye. All of you, best wishes. Take care. बाय। Bye.